So today's topic is redox reaction, and the chapter states of matter is for formative assessment only. So that is you can study yourself just for the sake of knowledge and for internal assessment. So now we are doing redox reaction. Redox reaction is that in which oxidation as well as reduction reaction both takes place, and there are few uh, things by which we can conclude whether it is oxidation reaction or reduction reaction. For example, number one is addition of oxygen and removal of oxygen. So in the reaction, if you find that there is oxygen is adding to the reactant, for example, here it is magnesium and oxygen is giving magnesium oxide, and in this mercury oxide here oxygen is released. So if there is removal of oxygen, it is reduction, or if there is addition of oxygen, it is oxidation. Now the second point is if there is removal of hydrogen. See, if addition of oxygen, it is oxidation, but removal of hydrogen, again it is oxidation. And if it is removal of oxygen, it is reduction, and if it is addition of hydrogen, it is reduction. For example, see hydrogen sulfide when react with chlorine, it forms HCl plus H. Here hydrogen is being added to chlorine. And if this ethene, when hydrogen is added to ethene, then it is the addition of hydrogen, and so it is reduction reaction. Now the third point is addition of an electronegative element, and here it is removal of an electronegative element, or you can say loss of electrons or gain of electrons. So how loss of electrons and gain of electrons you can find? For example, this sodium plus hydrogen becomes sodium hydride. Now here sodium is oxidized. Why? Because sodium, here the sodium is in the form of atom, element, and neutral atom, and here sodium is in the form of ion, sodium plus. It is sodium plus and hydrogen minus. So sodium is losing one electron and forming sodium plus. So it is loss of electrons. And gain of electrons, again hydrogen is gaining electron and forming H minus. So this reaction is redox reaction because here is loss of electron as well as gain of electrons. Now next, increase in oxidation number or decrease in oxidation number. This increase, beta, this oxidation number, how we can find oxidation number, that will I will discuss in the next video because it is in detail. Now next we find that what is oxidizing agent, what is reducing agent, which the element or atom which is reduced or which accepts electron, that is oxidizing agent, and which is oxidized और which donates electrons, जो इलेक्ट्रॉन देता है that is reducing agent, right, and which जो इलेक्ट्रॉन लेता है that is oxidizing agent, right. So oxidizing agent, and इसमें थोड़ा confusion है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बट इसको समझना बहुत आसान है बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो किसी को रिड्यूस कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और आप इसको ऑपोजिट ले सकते हो कि जो खुद रिड्यूस हो रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो थोड़ा ऑपोजिट करके देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज द चार्ज ऑन एन एटम इन अ गिवन स्पीशीज, स्पीशीज मीन्स कोई एटम है, एलिमेंट, आयन है, when the bonding electrons are counted towards more electronegative atom। ये बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ चार्ज ऑन एन एटम।
When an atom is attached to electronegative atom, then electronegative पे माइनस साइन आता है और उसके साथ जो अटैच्ड एटम है which is electropositive and can give electron easily, उसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में माना जाता है. ये I'll discuss later. Okay. Now in this देखो how to calculate oxidation number. Oxidation number of all the elements in their elemental form is taken as 0. जो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, as it is they are found in nature in this form, so this all of these species oxidation number is 0, right. elemental form में, standard form में जो भी species present होती हैं उनके oxidation number है 0. all the molecules इनका of all these molecules oxidation number of elements is 0. now oxidation number of first group आपने periodic table में देखा था, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. इन सब का क्या होगा +1 because these are most electropositive elements, they can easily give one electron, so oxidation number of all these elements will be +1. now oxidation number of second group is +2. beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, so all these have oxidation number +2, right, because they can easily give 2 electrons. now the oxidation number of oxygen is -2 because it can gain 2 electrons. In peroxides H2O2, Na2O2, each oxygen atom is assigned oxidation number -1. These are all standard oxidation numbers, तो ये आपको you have to remember it. now आगे देखो, in superoxides KO2, RbO2, oxidation number of oxygen atom is -half, right. now the oxidation number of hydrogen is +1, but in metal it is -1 because hydrogen easily can give 1 electron, but in metal hydride because in metals most electropositive atom के साथ जब attach होते हैं then इनका -1 माना जाता है. fluorine has oxidation number -1 because it always accepts 1 electron. the sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be 0. वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सभी ऑक्सीडेशन नंबर जो एटम्स का एक किसी कंपाउंड में है दैट शुड बी इक्वल टू 0. in polyatomic ion the algebraic sum of all the oxidation numbers of atoms of the ion must be equal to the charge on the ion. ये भी अगेन while calculating जितना चार्ज है उसके इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर को रखा जाता है. अब फॉर एग्जांपल देखो ये क्वेश्चंस करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा. ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट करो टू द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज. फॉर एग्जांपल इन दिस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, इसमें हमने फॉस्फोरस का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर. इन न्यूट्रल कंपाउंड अब देखो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज 0. न्यूट्रल कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन नंबर सबका 0 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने सोडियम का +1 है, अभी हमने देखा. हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है तो 1 हाइड्रोजन एटम का +1. फॉस्फोरस का हमने निकालना है तो x और ऑक्सीजन का होगा -2, एक ऑक्सीजन एटम का. अब इन सबको इस तरीके से रखो, +1 सोडियम एटम 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फॉस्फोरस सिंगल है, ऑक्सीजन है एंड इट इज़ इक्वल टू 0. अब इसके साथ सारा आपने इसको प्लस माइनस करके देखा, इसका कितना आ रहा है 5. तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 5, राइट. अब सेम इसमें ऐसे ही है, H2SO7 का है, इसका कैसे निकालेंगे. सल्फर अगेन इसको x मान लो. अब इसमें हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है, तो अगेन एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करो. सल्फर का x है, 2 एटम्स हैं, इक्वल करके इसको 0 के इक्वल रख दो. and on calculation what we find it comes out to be 6. clear. तो इस तरीके से बेटा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर आपको डिस्कस करूँगी.